The BJP National Executive meeting begins in Delhi today. The two-day meeting will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers including Home Minister Amit Shah, Chief Ministers of BJP-ruled states and other senior party leaders. BJP President JP Nadda will be chairing this meeting. Now, the BJP will hold a grand roadshow of Prime Minister Narendra Modi today on the first day of the National Executive. According to sources, the Prime Minister's roadshow will be around a kilometre leading up to the meeting point. Artists from different states will perform cultural performances during the roadshow. Party workers will stand along the roads to welcome the Prime Minister. The Delhi police has also issued a traffic advisory in view of the Prime Minister's roadshow, which takes place today afternoon. So be sure to check those details. With 9 state assembly elections in 2023 and just 15 months left for the big 2024 battle, the Bharatiya Janata Party seems to be shifting gears. Are they poll ready? And what really is their strategy? Join us right here on NDTV as we get you all the inside scoop and exclusive news breaks from the big BJP huddle, the National Executive meeting in the national capital, only on NDTV. In other news, amid a tussle with LG Vinay Kumar Saxena, the Arvind Kejriwal government has convened a 3-day assembly session beginning today. This is the 4th part of the 3rd session of the 7th Legislative Assembly of Delhi, and it's likely to be a stormy session, with the ruling Aam Aadmi Party likely to raise the issue of the Lieutenant Governor's alleged interference in the functioning of the government and appointment of MCD aldermen. AAP leaders are likely to raise the issue of the LG allegedly putting pressure on officials to stop development work being done by the government. So, a stormy session ahead for Delhi. Rajasthan Congress leader Sachin will be on a mass public outreach from today till the 20th of January, riding the high generated by Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. Sachin begins his Yatra from Nagaur, potentially eyeing the farmer and Jat belt traditional Congress voters. Now, Pilot launched his program without the party, and it could start a tug-of-war with Chief Minister Ashok Gehlot again, as the issue of leadership remains unresolved in Rajasthan, and that too going in to an election year. But sources close to Pilot say his mass contact program is aimed at strengthening the party and maintaining his political space in Rajasthan. Now, the Nepal air tragedy, at least 68 people confirmed dead on Sunday after a plane with 72 on board crashed minutes before landing in Nepal in the country's worst aviation disaster in 3 decades. The ATR-72 twin-engine turboprop aircraft plummeted into a steep gorge, smashed into pieces and burst into flames in the central city of Pokhara. The plane, operated by Yeti Airlines, was en route from Nepal's capital Kathmandu. 15 foreigners were on board, including 5 Indians. And there you can see the moment of the crash. इसमें हमारे यहाँ के 4 लोग हैं कि विशाल शर्मा जी का नाम आया है, ये अलावलपुर के हैं। सोनू जायसवाल जी हैं जहुराबाद के, और अनिल राजभर जी हैं, और एक है अभिषेक कुशवाहा। ये 4 लोगों की सूचना मिल रही है। ये जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं सोनू जायसवाल के, ये सोनू जायसवाल का है, बगल में विशाल का है, अनिल राजभर का भी बगल में ही है, थोड़ी दूर पर है। घूमने के लिए गए हुए थे और प्लेन क्रैश में ये घटना हुई है। हम लोग इनके परिवार के मिलने के लिए आए हुए हैं। जो भी संभव मदद होगी हमारे स्तर से, प्रशासन के स्तर से हम लोग करेंगे। जो घटना होनी थी वो घटना नेपाल में हुई है, कैसे हुई उसकी वहाँ अपना जांच चल रही है। डेड बॉडी आने के लिए जो प्रोसेस है, जो सूचना होगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जो हम इधर आए ना, तब उसमें आवाज़ आया था एक जोर से, तब हम उधर से 2-3 आदमी रनिंग करके आए इधर देखने के लिए। तब बाद में देखा तो एयरपोर्ट विस्फोट हो गया था। इसके बाद हम लोग इधर आके देखे 2 आदमी तो
जिंदा जो उद्धार करा था उसको तक गंडकी हॉस्पिटल में लेके गया। इसके बाद 6-7 लोग फिर प्लेन के नीचे उसमें दब गया था, उसको निकल गया। इसके बाद फिर नीचे जो खंडर है उसमें जाके देख लिया, तब देखा था तो उसमें 2-3 लाश और निकला था सब। मैं और मेरा दोस्त दीपक हम दोनों दौड़ते दौड़ते आए। उसके बाद दीपक जो है उधर बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए नीचे गया। हम तो नहीं गए, हम तो बाहर ही थे, और दीपक मेरा दोस्त वो नीचे गया और तकरीबन 35 लोगों को जो है निकाला। All right, so there you can see the moment that the plane crashed, where you see it tilting just before landing. Remember, this plane was about to land when suddenly it tilted and then went crashing down. Also very disturbing is the video taken from inside the plane by one of the passengers that records the moment that it landed. For more on the crash, we're joined by Beena Sinha, who joins us from Kathmandu. And Beena, thank you so much for speaking to NDTV. What is the latest you can share with us regarding the crash and the search for the bodies? हेलो हेलो हाँ जी, आज सुबह का क्या आप लेटेस्ट क्या बता सकते हैं हमको? लेटेस्ट तो अभी अब वहाँ पर रात में तो सौ निकालने का काम बंद हो चुका था, लेकिन अब सुबह हाँ आप कुछ ही देर में आप फिर जो बाकी 100, क्योंकि आपको 67 100 निकाले जा चुके थे 68 जी, और बाकी जो 4 बचे थे वो अभी नहीं निकल पाया था। उसका पता भी नहीं चल पा रहा था कि कहाँ अंधेरा हो गया था, और बहुत ही संकरी गली जैसा वहाँ जगह है, जिसके कारण वहाँ से नहीं पता हो पा रहा था कि कहाँ से निकल मैंने डेड बॉडी कहाँ है। लेकिन अब सुबह में फिर उद्धार का कार्य शुरू होगा, निकालने का काम शुरू होगा जी। और अभी कुछ पता चला है कि क्यों हुआ ये लास्ट मिनट जो क्रैश हुआ? जिस तरह से वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि प्लेन आ रहा है पोखरा में और फिर एकदम से टिल्ट होता है फिर और क्रैश हुआ, अभी कुछ भी आइडिया है कि क्या वजह है? हाँ, इसका कुछ यहाँ के जो विमान के जो विशेषज्ञ लोग हैं, ये लोगों का कहना है कि वो बहुत ही पुराना मॉडल का विमान था, जो आप इंडिया में और कहीं और भी उसको यूज किया जा चुका था, और वो बहुत दिनों तक ग्रांडेड भी था, और उसको फिर मरम्मत करके निकाला गया था, और 15 साल से भी ज्यादा मैंने पुराना था, और मैंने ये उसको मरम्मत कर करके उसको यूज किया जा रहा था। तो ये विमान के अंदर ही कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अब तो क्लियर तो जांच कमेटी बनी हुई है, अब जांच कमेटी भी उसका अपने एंगल से जांच करेगी, उसके बाद बताएगी, लेकिन तत्कालिक तौर पर यही कहा जा रहा है जी। और कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग कॉल किया था, फिर उसके बाद उस मीटिंग के बारे में बताइए। हाँ, मीटिंग किए थे, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और 5 सदस्यीय आपको जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें पूर्व सचिव को बनाया गया है उसका चेयरमैन, और वो लोग एक सेना के अधिकारी को भी रखा गया है, एक विमान के इंजीनियर को भी रखा गया है, और इन लोगों ने मिलकर ये लोग अपना रिपोर्ट देंगे, जांच करेंगे। आज शायद जांच कमेटी की टीम वहां पहुंचेगी। All right, thank you so much, Beena Sinha. They're giving us the latest that the search will resume this morning. 4 bodies remain missing. Yesterday they had to call off the search at night, but that search will resume this morning. A committee has also been appointed to look into this entire crash and what led to the crash. Though, as she was saying, preliminary, what a lot of the locals are claiming is that the aircraft was very old and it had even been standing for a while. It had been undergone several repairs, and then it was being flown between Kathmandu and Pokhara.
In other news, the Weather Office has predicted the return of the cold wave over many places in Delhi NCR starting today till Wednesday. The minimum temperature is expected to settle around 3 degrees. Delhi saw an intense cold wave spell from January 5th to January 9th, the second longest in the month in a decade according to the IMD data. And the cold wave to severe cold wave conditions are likely over many parts of Rajasthan, Punjab, Haryana and Delhi. From Thursday, the western disturbance might provide some relief from the chilly weather. Days after 20-year-old Sweety Kumari was hit by a car while heading home in Greater Noida, the Gautam Budh Nagar police has arrested a man and recovered a white Santro car. Earlier on the intervening night of December 31st, a car hit 3 engineering students, leaving one of them, Sweety Kumari, seriously injured. According to officials, the other 2 students suffered minor injuries. Let's go across to Mukesh now for more. And Mukesh, finally an arrest has taken place? देखिए बिल्कुल जो स्वीटी कुमारी इंजर्ड हुई थी उस मामले में जो आरोपी था वो भाग गया था मौके से अपनी गाड़ी के साथ में। पुलिस ने इसमें काफी ज्यादा मेहनत की, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा। उसके बाद पुलिस ने जो आरोपी गुलाब सिंह उसे गिरफ्तार किया है। जिस सेंट्रो कार से उसने घटना की थी वो सेंट्रो कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे स्वीटी कुमारी अपनी 2 दोस्तों के साथ जो बीटा 2 का इलाका है वहां से जा रही थी पैदल और अचानक इस कार सवार ने टक्कर मारी, जिसमें तीनों छात्र और छात्राएं घायल हो गए थे, लेकिन स्वीटी कुमारी काफी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके बाद जो कैलाश हॉस्पिटल है वहां पर उनका इलाज चल रहा था। उनके दोस्तों ने काफी ज्यादा हेल्प की और पैसा इकट्ठा किया स्वीटी कुमारी के लिए। इसके साथ में कैंपेन चलाया और काफी पैसा इकट्ठा किया गया। जो नोएडा पुलिस है उसने भी स्वीटी कुमारी के इलाज के लिए 11 लाख रुपए दिए हैं। तो कुल मिलाकर 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब ये जांच की जा रही है कि क्या घटना के वक्त आरोपी ने शराब पी रखी थी, क्योंकि 31 दिसंबर की रात थी और हो सकता है कि आरोपी पार्टी से लौट रहा हो, लेकिन काफी वक्त बीत गया है तो ये अभी कह पाना मुश्किल होगा। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। All right. Thank you so much, Mukesh. So there Mukesh telling us that finally the driver in the hit-and-run case involving Sweety Kumari has been arrested. Remember, there had been a lot of anger and protests over the accident. Welcome back. In first, the 75th Army Day was the parade and celebrations yesterday took place in Bengaluru outside Delhi ever since the celebration started in 1949. Army Chief General Manoj Pandey reviewed the parade and presented gallantry awards, followed by a daring motorcycle display by the Army Service Corps, tornadoes, a skydiving display by the paratroopers, daredevil jumps, and a fly past as well. Singh Garewal is now honoring the chief guest with a ceremonial salute. Spectacular bike stunts. They're riding their motorcycle in front of the formation. He is climbing on a 10-foot ladder. Breathtaking skydiving and band displays with the ASC Tornadoes team putting up a great show. Breaking away from the tradition, the Army Day was celebrated in Bengaluru, moving away from New Delhi for the first time since 1949. For assault rifle, the paratroopers are performing the double time is one of the youngest and most decorated regiments. Besides contingents of different regiments taking part in the Army Day parade, what stood out this time was the paratroopers that performed a free fall. He's an East Combat free faller and loves high-risk adventure sports. Addressing the event, Army Chief Manoj Pandey said how the Indian Army is prepared for future wars. Making a veiled attack at Pakistan, General Pandey said several proxy outfits have resorted to targeted killings to gain visibility. हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त
कदम में लाए गए हैं। Also highlighting that India is ready to meet any contingency along the India-China border. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयार है। Also strengthened its preparations for future wars. At another event held at the Army Service Corps Centre and College in the city in the afternoon, Defence Minister Rajnath Singh stressed on the need to operate weapons through artificial intelligence. समय के बदलने के साथ साथ आपके एडॉप्टेशन की क्षमता है, उसे और अधिक डेवलप करिए। बदलती दुनिया और बदलते सुरक्षा माहौल से हमने जो सीखें ली हैं, उदाहरण के लिए हालिया यूक्रेनी संघर्ष या फिर इसी तरह के अन्य संघर्षों से हमें जो सीखें मिली हैं, उसे हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने आप को लगातार अपडेट करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। Making references to the lessons learned from the Russia-Ukraine conflict, Defence Minister also commemorated the historic day, asking the army to be future ready. With Shrija in Bengaluru, Nayantara Singh for NDTV. Ahead of the union budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that she was aware of the pressures of the middle class, but also recalled that the present government has not imposed any fresh taxes on them. Sitharaman will present the union budget in the Lok Sabha on February 1st amid expectations that the government will raise income tax limit and provide relief to the middle class taxpayers besides others. Prime Minister Narendra Modi flagged off the 8th Vande Bharat Express yesterday, connecting two Telugu states from Secunderabad to Telangana to Visakhapatnam in Andhra Pradesh. A railway minister, Ashwini Vaishnav, called it a Sankranti gift. Prime Minister Narendra Modi flagged off the 8th Vande Bharat Express connecting the two Telugu states, Secunderabad in Telangana and Visakhapatnam in Andhra Pradesh. हर पैरामीटर पे वंदे भारत एक शानदार ट्रेन की तरह उभर के आती है। Railway Minister Ashwini Vaishnav called it a Sankranti gift. हमें अपने आप पे गर्व है कि इतनी शानदार वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाई और इस ट्रेन को आज देश के कोने-कोने में हमारे देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और देश में रेलवे की एक नई क्रांति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं। On the inaugural run were several school students, their parents and teachers. सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है, तो ये बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। Along with the students, we too are very excited. Only madam, not I am also excited. Because we got a chance. I am also excited. We got a chance to travel as the first passenger of the train, so we are very excited. How excited are you? बहुत खुशी है कि? We are very much excited. First Vande Bharat. We are on the 8th Vande Bharat Express that the Indian government, Indian Railways has started, and this is only the second Vande Bharat in the south of the country. This is a Sankranti gift to the people in the two Telugu states who are celebrating this festival, and for the first time Secunderabad and Visakhapatnam will be connected by the fastest possible train. There are going to be only about 4 stops in between from Secunderabad to Visakhapatnam, 2 of them in Telangana from Warangal and Khammam, and 2 of them in Andhra Pradesh, Vijayawada and Rajamundry. The train will cover 700 kilometers, starting from Secunderabad, stopping at Warangal and Khammam in Telangana, and Vijayawada and Rajamundry in Andhra Pradesh to reach Vizag in 8.5 hours. On behalf of the ruling BRS, Telangana ministers Mahmood Ali and Srinivas Yadav attended. Both Telangana and Andhra Pradesh are ruled by non-BJP governments, and this Sankranti gift could be seen as an attempt to reach out to people in the two states where the BJP has political ambitions. On the Vande Bharat Express with camera person Nagraju, Uma Sudhir, NDTV.